अब आ जाएं ओपन मैसेज फॉर्मेट पे, राइट? नाउ द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एन ओपन मैसेज फॉर्मेट. What he is saying, if authentication is the most important security service to the sender, then he would encrypt the data with his private key. I mean, अगर मेरे लिए authentication एक best option है अपने डेटा को send करने का, तो I would always encrypt my data by using my private key. Now anybody in the world who possesses my public key can decrypt that information anywhere in the world. I mean, कहीं भी वो डेटा चले जाए, उनके पास मेरी पब्लिक की अवेलेबल होगी. By using my public key they can decrypt that particular information. This complete procedure is being called as open message format, right? This provides assurance to the receiver that the only person who could have encrypted that data is the individual who has possession of that private key. If the sender encrypted the data with the receiver's public key, authentication is not provided because this public key is available to anyone. ठीक है, तो हम इस चीज को क्या कहेंगे कि हमारा डेटा जो है that is being encrypted when the data is being encrypted with the private key and decrypted with the public key. This is going to ensure authentication in our communication, and this procedure is being called as an open message format. और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सेंडर अपना डेटा पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है तो एक्चुअली हमारे पास ऑथेंटिकेशन अचीव नहीं होती, हमारे पास कुछ और अचीव होता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी. वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं. तो इज दैट क्लियर गाइस? नाउ व्हाट इज ओपन मैसेज फॉर्मेट? Encrypting data with the sender's private key is called as an open message format because anyone with a copy of the corresponding public key can decrypt the message. Confidentiality is not ensured. तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर अपना डेटा प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करेंगे और पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे, तो दिस प्रोसीजर इज बीइंग कॉल्ड एज our open message format, and we are going to achieve authenticity service from asymmetric key cryptography. But on the other hand, confidentiality is not going to be achieved through this particular procedure. So second, I mean to say that service that we can achieve through asymmetric key cryptography is confidentiality. अब देखें confidentiality हम कैसे अचीव कर रहे हैं. Now see, let's suppose we have all the public keys of mine are available over the internet. देखें, मेरी जो है ना प्राइवेट की मेरे पास है. आई मीन मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं. मैंने क्रिप्टो सिस्टम से एक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट की सेट जनरेट की है. प्राइवेट की मेरे पास है और पब्लिक की जो है ना मेरी अवेलेबल है ओवर इंटरनेट. नाउ इफ समवन वांट्स टू सेंड मी द डेटा, वो क्या कर रहा है, मेरी पब्लिक की को उठाता है, पब्लिक की को उठा के उस डेटा को इनक्रिप्ट करता है. इनक्रिप्ट करने के बाद उस डेटा को वो सेंड कर देता है टुवर्ड्स मी. Now when I receive that particular data, I am the only one who can decrypt the data. Why? The reason is the private key of that particular public key is only lying with me. वो मुझे ही पता है, इसके अलावा दुनिया में किसी और को नहीं पता. Now when I use to decrypt that particular data with my private key, this means that I am ensuring confidentiality feature. I mean nobody else can decrypt that information except from me. This is how your asymmetric key cryptography is going to ensure confidentiality feature inside our mechanism. So I'm reading it for you. Bob can encrypt data with the receiver's public key, and the receiver can then decrypt it with his private key. By decrypting the message with his private key, the receiver can be sure no one else can view this message. This provides confidentiality because the receiver is the only one who is supposed to have his private key. This is how you are going to achieve the confidentiality feature inside your system, right? और ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है जी, जिसको देख के आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे अचीव हो रही है. नाउ सी, वी हैव अ बॉब हियर, राइट? Bob is going to encrypt with Carol's public key. Okay, this is a Bob, this is Carol, right? अब Bob ने
कैरल को डेटा भेजना है। कैरल ने क्या किया हुआ है, अपनी प्राइवेट की तो उसकी है ही है, उसने अपनी पब्लिक की इंटरनेट पे पब्लिश की हुई है, ठीक है। अब बॉब क्या करेगा, कैरल की पब्लिक की उठाएगा, ठीक है, दैट इज बीइंग अवेलेबल ओवर एन इंटरनेट, उससे इस डेटा को एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट करने के बाद इट वुड बी सेंडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा टू कैरल। कैरल के पास जैसे ही वो इनक्रिप्टेड मैसेज पहुंचेगा, कैरल इज ऑलरेडी हैव इट्स ओन प्राइवेट की, उस प्राइवेट की को लेकर वो कैरल के मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा एंड कैन सी द इंफॉर्मेशन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो द ओनली पर्सन हु कैन सी दैट इंफॉर्मेशन इज कैरल, क्योंकि कैरल के अलावा किसी और के पास वो प्राइवेट की है नहीं जिससे उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जाए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर इन अवर सिस्टम, राइट। ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिक्योर मैसेज फॉर्मेट। व्हेन यू आर I mean encrypting your data with your public key and decrypting your data with your private key, right, with some receiver's private key, then this particular procedure is going to ensure confidentiality, and this whole mechanism is called as your secure message format। अब इसमें ये एग्जांपल्स हैं आर एस से, ई सी सी, डेफी, हेलमन, एल कमाल। अब ये सारे के सारे आपके पास ऑल आर दीज आर एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम, जैसे डैश, ट्रिपल डैश और वो सारे सिमेट्रिक की के एग्जांपल से, दीज आर द एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स एंड दीज आर द डिफरेंसेस, you can read it by yourself, right? Is that clear? So that is all from my side.